Hello everyone. Uh, for your UGC नेट एग्ज़ाम देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसको मुझे आज कवर करना है और बहुत शॉर्ट में मैं उसके इनके बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ. हिज नेम इज़ मार्शल मैकलुहान, द मैन हु सेड दैट द मीडियम इज़ द मैसेज एंड ऑल्सो द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज. और एंड ऑल्सो हॉट मीडिया एंड द कूल मीडिया, इनके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि एग्ज़ाम यानी यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. So his most popular idea is the medium is the message. So first I'll tell you about Marshall McLuhan. Is the time is 1911 to 1980, and he was a famous Canadian media theorist. और उन्होंने एक पॉपुलर आइडिया दिया था दैट मीडियम इज द मैसेज. सो बाय दिस मैक्लुहान meant that the way information is delivered, that is the medium, is more important than what the message actually says. यानी कि मैसेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मीडियम. और उन्होंने मीडियम को एक जोक की तरह से फ्रेज़ किया था, द मीडियम इज़ द मसाज नॉट द मैसेज. बाद में उन्होंने मैसेज को एक अलग वे में मेटाफर किया था दैट द मीडियम इज़ द मसाज, जिस तरीके से टू शो हाउ मीडिया शेप एंड इन्फ्लुएंस अस कंप्लीटली. So they massage our minds and our senses too. So this is how this person is, and definitely he must be having a great sense of humor as well. So McLuhan saw technology not as a threat but an extension of human abilities. उस टाइम जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही थी उन्होंने उनको थ्रेट के तौर पर नहीं लिया बल्कि एज ए ह्यूमन एबिलिटी के तौर पर लिया. एंड आर टूल्स machines and media expand what we can do. So this idea connects with modern discussion about the robots, AI, and cybernetics. So over time, McLuhan popularity has gone up and down, but his ideas keep coming back because they still help us to understand today's media driven world. So some of his important work is that I'll talk about later. Uh, I will also discuss about his major important works, that is The Mechanical Bride in the year 1951. So this was McLuhan's first major book, and इसमें उन्होंने analyze किया था the advertisement and the popular culture to show how modern life had become so mechanical and emotionally fragmented. So it's very very important, this Mechanical Bride. See, उन्होंने उस वक्त, आई एम टॉकिंग अबाउट 1951, उस टाइम पे ही इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर लिया था दैट हाउ द पीपल विल बिकम emotionally fragmented, and their life will be completely mechanical. The next book was Gutenberg Galaxy. Just after this book, like in the year 1962, he came with the book Gutenberg Galaxy. Very, very important book for this UGC, and this chronology could be asked in your exam. So first is The Mechanical Bride, 1951. Second is the Gutenberg Galaxy. So in Gutenberg Galaxy, he explained how the invention of printing changed the way human think. ओके, यानी प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद किस तरीके से लोगों की परसेप्शन चेंज हुए फ्रॉम ओरल एंड शेयर ट्रेडिशंस टू इंडिविजुअल एंड लीनियर थिंकिंग. Then print created a visual culture, and while new electronic media brought back to an auditory culture. So the third book was the extension, Understanding Media, the Extension of Man, which came in the year 1964. So that was the third book, and this is McLuhan's most important work. Okay, so that was the most important work of McLuhan. And Understanding Media में उन्होंने बताया था that he discussed how different forms of media like the clothes, house, money, games, advertisement, and television shape the human life. And he even argued that the electronic media create a world where everything happens everywhere at once. तो उन्होंने इसी में कहा था it is a global village. And मैक्लूहान लेगेसी के बारे में अगर हम बात करें तो मैक्लूहान showed that the media are not just the tools but also a powerful environment that shape how we think, we feel, and we interact. And his ideas predicted many aspects of our digital world today, from internet to the social media. So that was about the मैक्लूहान. And I think उनकी जो legacy है वो हमारे